Good afternoon. शुभ अपराह्न मु अम्लान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। तो आज आम कंटिन्यू करबा हमर एनसीईआरटी रो बायोलॉजी रो चैप्टर्स जोटा हम नीट पे करछे आउ आमे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंटिन्यू करछे। तो हमर लास्ट जो चैप्टर पार्शियली कंप्लीट हेतिला सेटा वाज कंटिन्यू करबा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रो हम आज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जोटा होची चैप्टर नंबर 15 हमरो क्लास 11th बायोलॉजी बुक रो। तो एटा प्लांट फिजियोलॉजी रो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर। ओके, तो सेटा हम कंटिन्यू करियो। लास्ट सेशन रे हम एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करथिले, तो आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करिबा। ओके राइट, तो लास्ट सेशन रे हम एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस करथिले, आज हम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करिबा ए चैप्टर रो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, निकोटियाना टबाकम। ओके, निकोटियाना टबाकम होची हमरो टबाको प्लांट। ओके, तो टबाको प्लांट विषय में ऑलरेडी पढ़थिले कि टबाको प्लांट गोटे शॉर्ट डे प्लांट। और शॉर्ट डे प्लांट मानर क्राइटेरिया कोन थाए, फ्लावरिंग इंड्यूस करया पे सेमानु को गोटे क्रिटिकल पीरियड रो लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, क्रिटिकल पीरियड गोटे थाए क्रिटिकल ड्यूरेशन, से क्रिटिकल पीरियड बा क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ लाइट रो कम अमाउंट ऑफ टाइम पे सेमानु को लाइट रो एक्सपोजर दरकार, ताहेले जेकी सेमानु करे फ्लावरिंग इंड्यूस हो। तो निकोटियाना टबाकम होची हमरो टबाको प्लांट जोटा गोटे शॉर्ट डे प्लांट। से क्वेश्चन गोची व्हेन एक्सपोज्ड टू मोर देन क्रिटिकल। ओके, व्हेन एक्सपोज्ड टू मोर देन क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट इट फेल्स टू फ्लावर एक्सप्लेन। से कोची कि निकोटियाना टबाकम होची गोटे शॉर्ट डे प्लांट, जेतेल तक हमें मोर देन क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट को एक्सपोज करछे से फ्लावरिंग करिबोनी। ऑब्वियसली काई से गोटे शॉर्ट डे प्लांट को एमिति फ्लावरिंग करिवो। देखो एनसीईआरटी रे कोटे पार्ट देची फोटो पीरियडिज्म अंडर रे हम ऑलरेडी पढ़थिले कि शॉर्ट डे प्लांट्स कोन, शॉर्ट डे प्लांट्स होचनी सेही प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स होचनी जो मानन को एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, व्हेreas शॉर्ट डे प्लांट्स होचनी एक्सपोज्ड टू लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन बिफोर फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड। ओके, तो फ्लावरिंग को इंड्यूस करया पे प्लांट्स मानन को गोटे प्लांट्स रिक्वायर पीरियोडिक एक्सपोजर। ओके, तो फ्लावरिंग करया पे प्लांट पे पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट दरकार पड़े। ओके, बुझा पड़ला एटा कोन लिखा अछि मन रखो एटा जिंसटा कि फ्लावरिंग इंड्यूस करया पे प्लांट्स माने को गोटे पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट दरकार पड़े। आ जे एक्सपोजर टू लाइट ता गोटे क्रिटिकल ड्यूरेशन रो हेल्प रे बा क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट रो हेल्प रे मेजर करा जाय। जो प्लांट माने को ए पर्टिकुलर क्रिटिकल पीरियड रो अधिका अमाउंट ऑफ टाइम पे लाइट रो एक्सपोजर दरकार से माने को लॉन्ग डे प्लांट्स पा जाय, जो माने को कम दरकार से माने को शॉर्ट डे प्लांट्स पा जाय। लॉन्ग डे प्लांट्स माने जदि हमें बिलो द क्रिटिकल ड्यूरेशन अमाउंट रे लाइट एक्सपोजर देबा तो से माने फ्लावरिंग करि परिबेनी। और शॉर्ट डे प्लांट्स माने जदि मोर देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन पे लाइट रे एक्सपोजर हेले तो से माने भी फ्लावरिंग करि परिबे नै। व्हेreas डे न्यूट्रल प्लांट्स होतने से प्लांट जो मानकर एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन और इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रेस्पॉन्स भितरे किछि भी कोरिलेशन न थाए। ओके, से माने को जाय डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो ऑब्वियसली एटे कोन लिखा है देखो, it is now also known that not only the duration of light period but also duration of dark period is of equal importance. Okay, बुझा पड़ला, duration of light period जेमति important, duration of dark period भी important। because एटे देखो short day plants में अगर short day plants में जो डायग्राम देखबा हमें critical photo period रो ऊपर above रहले no flowering होय और critical period रो below रहले flowering होय। ओके, एटा सिंपल सेटा ही पचाउछि निकोटियाना टबाकम जोटा गोटे शॉर्ट डे प्लांट जेतोडे ताको मोर देन द क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट को एक्सपोज करे तो फ्लावरिंग करिवनी। एटे भी सेटा लिखा छै अबव द क्रिटिकल फोटो पीरियड जदि अधिका टाइम पे लाइट रो एक्सपोजर रहा तो नो फ्लावरिंग हुए, और बिलो द क्रिटिकल फोटो पीरियड रहले तो फ्लावरिंग हुए। तो सेटा हुई शॉर्ट डे प्लांट्स पा जाय। काहे केमिति हुए, बिकॉज नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट बट आल्सो द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड मैटर्स, इट इज आल्सो ऑफ इक्वल इंपोर्टेंस। ओके, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड जते इंपोर्टेंट फ्लावरिंग इंड्यूस करे पे ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड भी सेते ही इंपोर्टेंट। एतिके अमाउंट ऑफ टाइम हमको लाइट रो एक्सपोजर दरकार, तो एतिके अमाउंट ऑफ टाइम गोटे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम डार्कनेस को भी एक्सपोजर दरकार। ओके, लाइट रो एब्सेंस भी जरूरी, सब टाइम लाइट रे रहले फ्लावरिंग इंड्यूस हे परिबो नाही। ओके, not only the duration of light period but also the duration of dark period is important, very important point। Okay, hence it is said that flowering in certain plants depends not only on the combination of the dark and light exposure but also on their relative durations, very important point बुझा पड़ला। this response of plant to the periods of day and night is known as photoperiodism, बुझा पड़ला, एटा को photoperiodism कहा जाय। okay, height of perception of
site of perception of light or dark duration कौन हमारा होची leaves. Okay, it has been also hypothesized that गोटे hormonal substance ଅଛି जोटा flowering by response, but सेटा गोटे hypothetical substance. Okay, एटा को just गोटे hypothesis दिया अछि, actually सेमिति किछि substance मिलिनी, गोटे just गोटे hypothesis दिया अछि कि flowering केमिति induce होय जेतेबेले shoot apical जेतेबेले shoot apical meristem टा floral meristem रे convert हे जाय, right? shoot apices टा जेतेबेले modify कि flowering apices बन जाय prior to flowering सेतेबेले flowering हो, तो ये जो shoot apical meristem टा floral meristem रे convert केमिति होय गोटे hypothesis दिया जायछि. It has been hypothesized that there is a hormonal substance that is responsible for flowering. Okay, what is just गोटे hypothesis एटा, एक्चुअली किछि हार्मोनल सब्सटेंस एमिति डिस्कवर करा जायनि, एटा जस्ट गोटे हाइपोथेसिस कि एमिति आर गोटे हार्मोनल सब्सटेंस अछि जोटा फ्लावरिंग इंड्यूस करूछि, जोटा सूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लोरल मेरिस्टम रे कन्वर्ट करूछि. आ मन रखो सेही जो हाइपोथेटिकल सब्सटेंस रो ना हो, मन रखो ए जो हार्मोनल सब्सटेंस विषय हम कथा होछे आर ना होछि फ्लोरिजन. आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एटा बारंबार को होछि, एटा गोटे हाइपोथेटिकल सब्सटेंस. एक्चुअली प्लांट्स रे एमिति आरो किछि भी सब्सटेंस नोन एज फ्लोरिजन आज जाय डिस्कवर करा हेनी. जस्ट गोटे हाइपोथेसिस, जस्ट एमिति गोटे थ्योरी बना हेछि कि फ्लोरिजन रो प्रोडक्शन सूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लोरल मेरिस्टम रे कन्वर्ट करे जो द्वारा फ्लावरिंग इंड्यूस हो. और फ्लोरिजन केतेबेले प्रोड्यूस हो, ई जो हार्मोनल सब्सटेंस अछि, हार्मोनल सब्सटेंस टा कोडे प्रोड्यूस है, मन रखो एटा लीव्स रे प्रोड्यूस है. बुझा पड़ला? फ्लोरिजन प्रोड्यूस्ड इन लीव्स. ओके, फ्लोरिजन टा लीव्स रे प्रोड्यूस हुए आउ से तापरे सूट एपिसेस को माइग्रेट करे जोठी से फ्लावरिंग इंड्यूस करे ओनली व्हेन द प्लांट आर एक्सपोज्ड टू द नेसेसिव इंडक्टिव फोटो पीरियड. ओनली व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू द नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड. जेतेबेले ओनली व्हेन कंडीशन होची ओनली व्हेन प्लांट माने नेसेसिव इंडक्टिव फोटो पीरियड जति कि तांको पई फोटो पीरियड दरकार, जति शॉर्ट डे प्लांट्स तो बिलो द क्रिटिकल फोटो पीरियड, और जति लॉन्ग डे प्लांट्स अबव द क्रिटिकल फोटो पीरियड जति कि तांको पई नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड दरकार, तत्तिकी को एक्सपोज हेले ही प्लांट्स मानकरे ए फ्लोरिजन नामरो जो सब्सटेंस अछि बा हार्मोन अछि सेटा सिक्रेट हुए. और सेटा कोड सिक्रेट हुए लीव्स रे, काहे कि बिकॉज़ साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क होछि हमरो लीव्स. ओके, तो डार्क पीरियड भी important कहीं ना फ्लावरिंग डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क रो कॉम्बिनेशन ऊपर ही फ्लावरिंग डिपेंड करनी, ताकर रिलेटिव ड्यूरेशन ऊपर भी डिपेंड करछि. जति कि हमकु जेमिति गोटे ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट रो पीरियड दरकार, सिमिलरली डार्क पीरियड द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड भी इक्वली इंपोर्टेंट. ओके, तो लाइट और डार्क रो कॉम्बिनेशन भी दरकार और सेमान रिलेटिव ड्यूरेशन भी ऑप्टिमम होबो दरकार. तो ए जो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट जो द्वारा से लाइट और डार्क रो प्रेजेंस रे फ्लावरिंग इंडक्शन करंदी सेटा फोटो पीरियडिज्म कहा जाय. लाइट कोठे परसीव हुए, फोटो पीरियडिज्म परसीव हुए लीव्स रे. तो जतरे फोटो पीरियड और ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फोटो पीरियड एक्सपोजर हुए तो लीव्स रो फ्लोरिजन प्रोड्यूस हुए. फ्लोरिजन जाई सूट एपिकल मेरिस्टम सिस्टम रे कन्वर्ट करे और फ्लावरिंग हुए. तो एबे क्वेश्चन एटा कि निकोटिना टैबाकम को जदि हम अबव द क्रिटिकल फोटो पीरियड एक्सपोज करिवा तो प्लांट माने फ्लावरिंग काहे के हुए, बिकॉज़ मन रखो माने शॉर्ट डे प्लांट्स को बिलो द क्रिटिकल फोटो पीरियड दरकार. आउ जेहेतु क्रिटिकल पीरियड रो अधिका लाइट दिया जाउछि तो ऑब्वियसली सेमानंकर कोन हुए फोटो पीरियडिज्म नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियडिज्म जति दरकार फोटो पीरियड सेति टू अधिका होछि. आउ एटे क्लियरली लिखा है कि द पीरियड ऑफ डार्कनेस इज आल्सो इंपोर्टेंट. ओके, डार्क पीरियड इज ऑफ इक्वल इंपोर्टेंस. केते ड्यूरेशन पई डार्क रे रोचंदी सेटा भी इंपोर्टेंट फ्लावरिंग इंड्यूस करे पई. तो शॉर्ट डे प्लांट्स बनाओ पई डार्क ड्यूरेशन टा अधिका रहे एज कंपेयर्ड टू लॉन्ग डे प्लांट्स. ओके, तो सेमानकु कंटीन्यूअस एक्सटेंडेड डार्क पीरियड रे रहिबा को पड़िबो. फोटो पीरियड टा बिलो द क्रिटिकल पीरियड रहबा दरकार और बाकी टाइम रे सेमानकु कंटीन्यूअसली एक्सटेंडेड डार्क पीरियड प्रोवाइड करियो पड़ियो, सेतेबेले जाय कि प्लांट टा ब्लॉसम करिवो वा फ्लावर प्रोडक्शन होबो. Also, these plants do not develop blooms when they are exposed to photo period that is longer than the crucial period. Okay, तो जेहेतु एमानो टबाको को एथिरे मोर अमाउंट ऑफ लाइट को एक्सपोज करा आइछि सेति पई एथिरे फ्लोरिजन नामक जो हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है सेटा प्रोड्यूस हैनी, एमिति थ्योरी अछि. जेहेतु ताको अधिका लाइट एक्सपोजर कराला तो सेथिरे फ्लोरिजन ऑब्वियसली प्रोड्यूस हलानी. और फ्लोरिजन जदि प्रोड्यूस होबनी तो सूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम रे कन्वर्ट होबनी, मॉडिफाई होबनी, तो ऑब्वियसली फ्लावरिंग होबनी. राइट, बुझा पड़ला? Second question, what are the structural characteristics of meristematic cells near root tip, the cells in the elongation zone of the root? Meristematic cells near the root tip of cells in the elongation zone of the root are structural characteristics. तो एटा हमरो रूट ग्रोथ रसला हम जानते रूट ग्रोथ रो डिफरेंट रीजन्स अछि. Region of maturation, region of elongation और region of cell division, right?
तो सेटा ही पचाउछि एठी मो कोन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक अछि रूट टिप रो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाखरे और रूट रे इलोंगेशन जोन रे जो सेल्स माने अछि सब so it clearly reflects the period of growth is generally divided into three phases that is meristematic phase, elongation phase और maturation phase. तो से हमको meristematic cells और elongation zone ର cells मानकर structural characteristic पचारछि ओके तो root tips रे जदि हम देखिबा there we can find constantly dividing cells both at the root apex and shoot apex okay तो root tips रे हमको constantly dividing cell मिलियो तो ए पार्ट टा होछि हमरो meristematic phase of growth ए रीजन रे हमको मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स रो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक कोन फर्स्ट पॉइंट होची समानंगर रिच इन प्रोटोप्लाज्म सेकंड दे पोजेस लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्ली cell walls are primary in nature cell walls are primary in nature thin cellulosic with abundant plasmodesmatal connections okay the cells just proximal to the meristematic zone okay जो सेल माने just proximal to the meristematic zone थांदी सेमाने फेज ऑफ इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करंती सेथिरे कोन थाए सेथिरे इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन देखियो मिले सेल एनलार्जमेंट देखियो मिले और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ओके these are the characteristics of the cells in this phase further away from the apex आउरी जदि हमें further away जीवा तो सेही phase of elongation जो जो हमें जेमिति जेमिति एपेक्स रो एवे एवे के आछे फर्स्ट रे एपेक्स रे बा रूट टिप रे कोन थिला मेरिस्टेमेटिक जोन राइट फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन जो हमर थिला सेटे थिला राइट मेरिस्टेमेटिक जोन रो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी एठी देखिले राइट मेरिस्टेमेटिक जोन रो आउटी के अधिक प्रॉक्सिमल जीवा ता आसीबो जोन ऑफ इलोंगेशन राइट जोटे फेज ऑफ इलोंगेशन ग्रोथ फेज को फेज देखा जाए इलोंगेशन फेज देखा जाए आउरी जदि हम प्रॉक्सिमल आसीबा आउरी प्रॉक्सिमल आसले कोन हमु देखा जिवो फेज ऑफ मैच्योरेशन देखा जिवो ओके तो हमको से सिंपली पचारछि कोन कोन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक अछि मेरिस्टेमेटिक सेल्स रो आ इलोंगेशन जोन रे जो सेल्स मन अछि सेमानकर तो फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स रो कैरेक्टरिस्टिक आउ थरे मु तुमको रिवाइज करूछि देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स रे कोन थाए सेमानकर रिच इन प्रोटोप्लाज्म सेमानकर सेल जो थाए रिच इन प्रोटोप्लाज्म थाए बहुत अधिक अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म थाए सेमानकर लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई थाए न्यूक्लियस रो साइज बहुत बड़ थाए और कॉन्स्पिशियस माने इजीली आइडेंटिफाएबल ओके इजीली आइडेंटिफाएबल क्लियरली देखा जाउतबो और लार्ज साइज रो न्यूक्लियस थाए ओके फर्स्ट कथा होची सेमानकर प्रोटोप्लाज्म रो अमाउंट बहुत अधिका थाए सेमानकर बहुत लार्ज साइज रो क्लियरली विजिबल न्यूक्लियाई थाए सेल वॉल्स जो थाए जनरली प्राइमरी इन नेचर थाए प्राइमरी सेल वॉल कोन सेकेंडरी सेल वॉल कोन जो anatomy of flowering plants में already पढ़ सारछे राइट प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल हमर जो कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट है मिडिल लैमेलर से सो तुम तो प्राइमरी सेल वॉल है सेटा बहुत ही थिन थाए और सॉफ्ट थाए राइट एटा तमे ऑलरेडी पढ़िछ तो ए जो सेल्स में थांती एमानकर जो सेल वॉल थाए जनरली प्राइमरी इन नेचर थाए सेति में थिन थाए और सेलुलोजिक थाए ओके एमाने ए जो मेरिस्टेमेटिक जोन रे जो सेल माने थांती सेमानकर सेल वॉल प्राइमरी नेचर रो थाए थिन थाए और सेलुलोजिक थाए और सेथिरे एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस थांती बुझा पड़ला नेक्स्ट एबे जिबा इलोंगेशन जोन रो सेल्स मानकर कोन कैरेक्टरिस्टिक थाए फेज ऑफ इलोंगेशन रे कोन कैरेक्टरिस्टिक अछि फर्स्ट अछि इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन माने अधिका नंबर ऑफ वैक्यूल्स थाए ओके बुझा पड़ला फर्स्ट पॉइंट increased vacuolation अधिका number of vacuoles present है cell enlargement cell रो size अधिका है because obviously नार भी जଣା पड़छि phase of elongation माने एटे cell रो size increase करछि cell रो number कोटे increase करछि meristematic zone रे cell रो size कोटे increase करछि elongation zone रे maturation zone रे cell माने already differentiated हे जायछन्ती ना तांकर size increase करछि ना तांकर number increase करछि पड़ला as simple as that मेरिस्टेमेटिक जोन रे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करछि इलोंगेशन जोन रे साइज ऑफ सेल इंक्रीज करछि मैच्योरेशन जोन रे सामान्य मैच्योर बा डिफरेंशिएटेड हे जायछन्ती तो ना नंबर इंक्रीज करछि ना साइज इंक्रीज करछि अब एथिरे आउ कोन थाए इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन अधिका नंबर ऑफ वैक्यूल्स थांती सेल रो साइज इंक्रीज करथाय सेल एनलार्जमेंट देखिया मिले और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन हम ऑलरेडी देखिथिले मेरिस्टेमेटिक जोन रे सेल्स मनवर खाली प्राइमरी सेल वॉल थिला तो एथिरे न्यू सेल वॉल डिपोजिशन यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल धीरे धीरे डेवलप करूछि ओके थर्ड क्वेश्चन does the growth pattern in plants differ from that in animals? Do all part of the plant grow indefinitely? If not, name the regions of the plant which can grow indefinitely. तो जे पूछ कि plants मानकर growth pattern animal मानकर growth pattern रो केमिति different तो plant growth generally is indeterminate okay plant रो growth जो थाए सेटा generally indeterminate बा unlimited थाए okay indefinite indeterminate बा unlimited
It clearly ଲେଖା ହେଇଛି plant growth is unique because plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life. Very very important. Plant growth କାହିଁକି unique? Because plant growth unique ଏଥିପାଇଁ because plants ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ capacity ଥାଏ କି ସେମାନେ unlimited growth show କରିପାରିବେ throughout their life. Okay. Plant growth କାହିଁକି unique? Because plants ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ capacity ଅଛି କି ସେମାନେ throughout their life unlimited growth show କରିପାରିବେ. ଯେତେ ଚାହିଁବେ throughout the lifetime growth. ମାତ୍ର animals ମାନଙ୍କର ସେମିତି ନଥାଏ. Animals ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ particular age ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, right? But plants ମାନେ indefinitely throughout their life grow କରିପାରିବେ. ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ indeterminate growth ବା indefinite growth. ସେଥିପାଇଁ plant growth ଏଟା unique feature, okay? Ability of the plant is due to the presence of meristems at certain locations in their body. ଆଉ ଏଇ ability of plant ର reason କଣ? Plant କାହିଁକି indefinitely grow କରିପାରିବ? Because ତାଙ୍କ bodyରେ ଏଇ ability ର reason ହଉଛି presence of meristems, okay? Presence of meristems at certain locations in their body. Certain locations plant ର body ର certain locations ରେ meristematic tissue present ଅଛି ଯୋଉ tissue ଯୋଗୁ ଏଇ unique feature ଟା plant ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, right? Because meristem ରେ କଣ ଥାଏ? Meristems ରେ actively divide cells ଥାଏ ଯୋଉମାନେ indefinitely divide କରନ୍ତି ଆଉ indefinite growth provide କରନ୍ତି plant କୁ। ବୁଝା ପଡିଲା? This ability of plant is due to the presence of meristems. Meristems ର presence ଯୋଗୁ ଏଇ feature ଅଛି plant ର। ଆଉ ମନେ ରଖ meristems only certain locations of the plant body ରେ ଥାନ୍ତି. The cells of such meristems have capacity to divide and self perpetuate. Okay, meristematic cells ମାନେ obviously rapidly dividing cells. The product, however, soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body. But धीरे धीरे obviously जो cells मैंने meristematic region में produce होते धीरे धीरे मेरिस्टम टा ग्रो करी करी ऊपर को चले जाए तो जो cells मैंने मेरिस्टम को जस्ट प्रोड्यूस करते ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋ କରିବେ ଡିଭାଇଡ କରିବେ ବଟ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ବି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିଯିବେ ଓକେ this form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called open form of growth. So এটা ଗୋଟେ very very important MCQ open form of growth କଣ a form of growth ଯୋଉଠି new cells are always being added to the plant body okay new cells ମାନେ new cells are constantly being added to the plant body by the activity of the meristem ବା meristematic tissue activity ଯୋଗୁଁ plant ର body ରେ new cells are constantly being added okay constantly ନୂଆ cells ମାନଙ୍କର addition ହଉଛି plant body ରେ meristem ର action ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏଇ form of growth କୁ କୁହାଯାଏ open form of growth open କାହିଁକି because unlimited growth ଅଛି animals ରେ so does the growth pattern in plant differ from animals obviously animals ରେ ଏଇଭଳିଆ growth ହୁଏନି animals ମାନଙ୍କର growth limited animals ମାନେ ଗୋଟେ position ଗୋଟେ point ରେ ହିଁ growth କରିପାରିବେ ତାପରେ animals ମାନଙ୍କର growth stop କରିଯିବ obviously the animals ମାନଙ୍କର closed form of growth okay animals ମାନେ କଣ show କରନ୍ତି closed form of growth plants ମାନେ କଣ show କରନ୍ତି open form of growth okay now do all the parts of the plant grow indefinitely no obviously not plants ର କୋଉ part indefinitely grow କରିବ ଯୋଉ part ରେ meristem ଅଛି ବା meristematic tissue ଅଛି ଏବେ क्वेश्चन होची मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अच्छी कोट रूट एपिकल मेरिस्टम रूट एपिकल मेरिस्टम हम ऑलरेडी प्लांट एनाटॉमी चैप्टर रे पढ़ी सारछे रूट रो टिप्रे रूट एपिकल मेरिस्टम था शूट टिप्रे शूट एपिकल मेरिस्टम था दे आर रिस्पांसिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट हाउस माने प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बा लेंथ ऑफ द एक्सिस को इंक्रीज करिया पे मेनली रिस्पांसिबल एंड प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलोंग देयर एक्सिस ओके तो प्राइमरी ग्रोथ कोन increase in the size of the plant along the axis ମାନେ height ବା length increase କରୁଛି plant ର by shoot apical and root apical meristem ଆଉ କୋठे କୋठे ଏଇ meristematic tissue ଥାଏ dicotyledonous plants ଆଉ gymnosperms ରେ lateral meristems ବି present ଥାନ୍ତି okay lateral meristems vascular cambium ଆଉ cork cambium ଆଉ ତିନିଟା type ର meristematic tissue lateral meristems vascular cambium ଆଉ cork cambium କଣ କଣ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି more ଆଉ କିଛି type of meristematic tissue ଯୋଉମାନେ dicot plants ଆଉ gymnosperms ରେ ଥାନ୍ତି if they appear later in life okay later in life gymnosperms ଆଉ dicot ରେ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଏଇ meristem ମାନଙ୍କର function କଣ ଏଇ meristem ମାନଙ୍କର function ହଉଛି increase in the girth of the organs in which they are active ତ ଏମାନେ girth increase କରିବେ ବା ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ secondary growth of the plant ତ primary growth of the plant କଣ primary growth of the plant ହଉଛି along the axis plant ର size ବଢିବ upwards to shoot apical meristem lower part downward to root apical meristem okay so primary growth secondary growth कौन secondary growth होची increase in the girth by increase
diameter, okay, increase in the thickness of the plant body. ସେଇଟା କରନ୍ତି lateral meristem, vascular cambium or core cambium. ଆଉ ଗୋଟେ third type of meristem ଥାଏ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ intercalary meristem. ମନେ ରଖ, intercalary meristem, okay. Intercalary meristem ର function କଣ? Intercalary meristem ର function ହଉଛି internodal elongation, okay. Internodes रे present ଥାଏ intercalary meristem, से भी plant रो growth axis along the axis ही plant रो growth कराए, plant रो length को increase कराए, okay. Intercalary meristem रो function भी along the axis ही plant रो growth करेगा, but speciality ये कि से only internodal elongation करेगा, internodes से ही only elongation करेगा, internodes से elongation करेगा. Question number 4. Explain in 2 to 3 lines each of the following terms with the help of examples taken from different plant systems. 2 to 3 lines से explain कौन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन कौन? देखो, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन डेफिनेशन और एग्जांपल लिखिया ପାଇଁ କୋଛି, ओके. मतलब जो सेल्स गुडी को रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टम रे और कैम्बियम गुडी को थांदी सेमाने ओबिटल, बट धीरे धीरे किछि समय पर सेमानंकर डिफरेंशिएशन होय और सेमाने मैच्योरेशन, हमारा मैच्योरेशन हो, सेमानकर डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन हो, सेमाने मैच्योर बा डिफरेंशिएटेड हो जानती to perform specific function. किछि गोटे specific function perform करिया ପାଇଁ ସେମାନେ differentiate ଆଉ mature ହେଇ जाती. This act which leads to maturation is known as differentiation, okay. तो जो प्रोसेस द्वारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मानकर डिफरेंशिएशन होए और ସେମାନେ गोटे पर्टिकुलर फंक्शन प्रोड्यूस करिया ପାଇଁ मैच्योर हेइ जाती, सेटा को कहल जाय डिफरेंशिएशन. When meristematic cells become specialized for a particular function, okay. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो माने इनिशियली एक्टिवली डिवाइड सेल्स थिले, जेतेबेले से मेरिस्टेमेटिक सेल्स माने डिफरेंशिएट कर जिवे बा मैच्योर हे जिवे टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, ताबेले स्पेशलाइज्ड हे जिवे, सेही प्रोसेस को कहल जाय डिफरेंशिएशन. और सेमानकर डिवीजन वाला जो कैपेसिटी टू डिवाइड बा एबिलिटी लूज कर, they lose the ability to divide and they get different or get specialized to perform a specific function. और ये फेनोमेनन को डिफरेंशिएशन कहा जाए. डिफरेंशिएशन टाइम रे कौन होय? डिफरेंशिएशन टाइम रे सेल्स बहुत सारा स्ट्रक्चरल and functional change undergo करे, both in their cell walls as well as protoplasm. For example, trachyary element जो देखबा, the cells lose their protoplasm. Trachyary elements रे जेतेबेले मेरिस्टेमेटिक सेल्स गुडी को डिफरेंशिएशन है कि परमानेंट सेल्स रे कन्वर्ट होंती, से डिफरेंशिएशन टाइम रे साने प्रोटोप्लाज्म लूज कर दियंती. दे आल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रांग इलास्टिक एंड लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल. सेमानकर गोटे बहुत स्ट्रांग इलास्टिक और लिग्नोसेलुलोजिक, माने सेतो लिग्निन और सेलुलोज डेटा जक प्रेजेंट होची, सेकेंडरी सेल वॉल सेमानकर डेवलप होबो in order to carry long distances under extreme tension. Extreme tension है obviously trachyary से जो tall plants रे water conduct करंती to a very heights, okay. तो एटा हे गला हमर डिफरेंशिएशन और एग्जांपल भी मिल गला. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू माने फॉर एग्जांपल ट्रैकियर एलिमेंट्स नामे एटा एग्जांपल ले गले, ओके. सेल्स माने केबे हमर प्रोटोप्लाज्म लूज करछनी और लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल जोटा बहुत इलास्टिक और स्ट्रांग है, सेटा डेवलप करूछन. डिफरेंशिएशन बुझा पड़ला. नेक्स्ट टाइम जिबा डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन कोन? प्लांट्स सो अनदर इंटरेस्टिंग फेनोमेनन दैट लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, एबे जो differentiated living cells माने छंदी, by now they have lost the capacity to divide, can again regain the capacity. जदी ए differentiated cells इनिशियली मेरिस्टेमेटिक सेल्स थिले, सेमाने को डिफरेंशिएशन हला, डिफरेंशिएटेड सेल्स ले सेमाने निजर ग्रोथ डिविजन एबिलिटी टा लूज कर देले. बट एई जो डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स में नाचले, सेमान को पाखरे आउथरे पुणी सेही कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को रीगेन करिवार एबिलिटी थाए अंडर सर्टेन कंडीशंस. किछि सर्टेन कंडीशंस रे सेमाने एई डिवीजन कैपेसिटी को रीगेन करि परिबे. जेतले एई डिवीजन कैपेसिटी को सेमाने रीगेन कर देबे, सेडा को जाबो डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन बुझा पड़ला. डी डिफरेंशिएशन माने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हे जातला, तारो डी डिफरेंशिएशन माने रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएटेड सेल्स गुडी को पुणी एबिलिटी टू डिवाइड रीगेन करछन. एग्जांपल एटे कोन हो? एग्जांपल होची फॉर्मेशन ऑफ द मेरिस्टेम्स लाइक इंटरफैसिकुलर. मन रखो एटा गोटे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट. इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स. मन रहला एग्जांपल कोन? डी डिफरेंशिएशन रा फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स. जो फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स अछली, सेमानकर डी डिफरेंशिएशन हे कि इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम डेवलप कर. एठी गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट एटा, कहिना एटे केयरफुली पढिबा पडियो तुमको. इंटरफैसिकुलर कैम्बियम ऑल्सो गोटे, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी गोटे अछि.
इटे क्लियरली तुमको भल से पढ़ियो पड़िबो मन रखे पड़ियो कंफ्यूज होबनी एग्जाम रे से जानी सुनी कि तुमको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऑप्शन रे देथिबो जल्दबाजी रे भूल भी हे पारे ओके तो भल से एटा क्लियरली देखियो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ही लिखा है राइट तो डी डिफरेंशिएशन रे ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल माने रीगेन करछन्दी निजर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन फॉर एग्जांपल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स रो डेवलप करछि एमिति ए प्रोसेस रे मेरिस्टेम और टिश्यू गुडी को एबिलिटी टू डिवाइड और सेल्स अगेन प्रोड्यूस करछन्दी ओके तापर आसे रीडिफरेंशिएशन केमिति हुए रीडिफरेंशिएशन कोन रीडिफरेंशिएशन होची जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स गुडी को माने ऑलरेडी फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक सेल्स रे डिफरेंशिएशन हुए डिफरेंशिएटेड सेल्स अगेन एबिलिटी टू डिवाइड रीगेन सेडा को डी डिफरेंशिएशन एबे जो डी डिफरेंशिएटेड सेल माने छने माने अगेन से माने एबिलिटी टू डिवाइड से माने प्रेजेंट अछि से माने पूरी डिफरेंशिएट कर जिवे माने रीडिफरेंशिएशन आउ थरे डिफरेंशिएशन बुझा पड़ला री माने अगेन तो आउ थरे डिफरेंशिएट करछन्दी such meristem tissue are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide and mature to perform switch function. पुणी से माने differentiation है कि ଗୋଟେ particular function पे से माने mature है जो और redifferentiation रा example कौन है एटा NCERT रे देनी मु तुमको लिखुची कैम्बियम जो कैम्बियम हमें अभी पढ़िले इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम से कैम्बियम टा रीडिफरेंशिएट करिवो ओके कैम्बियम रीडिफरेंशिएट्स टू फॉर्म कॉर्टेक्स ओके कॉर्टेक्स तुम ऑलरेडी कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल तो तुम ऑलरेडी पढ़ी छ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रे तो जो कैम्बियम अछि से कैम्बियम टा रीडिफरेंशिएट करके कॉर्टेक्स फॉर्म करिवो एडा अछि एग्जांपल ऑफ रीडिफरेंशिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा auxins are growth hormones capable of promoting cell elongation they have been used in horticulture to promote growth flowering and rooting explain the meaning of the following term related to auxin okay तो ये जो फर्स्ट कहछि कि ऑक्सिन्स होचनी ग्रोथ हार्मोन जो माने सेल इलोंगेशन को प्रमोट कर परबे से माने हॉर्टिकल्चर रे यूज करा जाय ग्रोथ फ्लावरिंग और रूटिंग को प्रमोट करिया पई ऑक्सिन प्रिकर्सर कोन एंटीऑक्सिन कोन और सिंथेटिक ऑक्सिन कोन ओके ऑक्सिन प्रिकर्सर होचनी सेही रॉ मटेरियल जो माने इनिशियल सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन पे दरकार ओके से माने ऑक्सिन प्रिकर्सर होचनी सेही रॉ मटेरियल्स जो रॉ मटेरियल्स माने इनिशियली ऑक्सिन रा सिंथेसिस पे दरकार ओके The raw materials which are required for initial synthesis of auxin are known as auxin precursors. Auxin precursors होचनी सही raw materials जो माने initial synthesis of auxin पे दरकार पड़िबे. For example हमको जिंक दरकार पड़िबो auxin रा synthesis पे हमें already mineral nutrition chapter रे पढ़ी छै कि जिंक हमको दरकार synthesis of auxin पे ओके. तो auxin precursors होचनी सही raw material जोड़ा auxin रा synthesis पे दरकार. Next हमारा है antioxin. Antioxin as the name suggests ना रोई जणा पड़छि एंटीऑक्सिन कौन एंटीऑक्सिन होचंदी सही केमिकल सब्सटेंस जो माने ऑक्सिन रो फंक्शंस को नेगेट करिवे बा एंटागोनिस्टिक सेमानकर एक्शन थिबो एज कंपेयर टू ऑक्सिन एंटीऑक्सिन रो किछ एग्जांपल्स होची हमरो पारा क्लोरो फिनॉक्सी आइसोब्यूटारिक बहुत लंबा ना अछि पारा क्लोरो फिनॉक्सी आइसोब्यूटारिक एसिड ओके एटा को शॉर्ट रे में पीसीआईबी कहबो आउ गोटे एंटीऑक्सिन अछि हमरो टीआईबीए टीबा ओके तो पीसीआईबी और टीआईबीए होछने हमरो एंटीऑक्सिडेंट्स ओके तो पूछा पड़ला पीसीआईबी और टीआईबी होछने हमरो एंटीऑक्सिडेंट्स समान सही कंपाउंड जो माने एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिजन को ब्लॉक कर देबे नेक्स्ट होछ हमरो सिंथेटिक ऑक्सिजन में ऑब्वियसली नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिजन कोन आईएए और आरटीओ विगल क्रिएशन के छिला विगल ब्यूटारिक एसिड बट किछि सिंथेटिक ऑक्सीडेशन जो माने आर्टिफिशियली लैब रे क्रिएट होतानी बा केमिकल प्रोसेस द्वारा प्रोडक्शन होची तो जो माने आर्टिफिशियली क्रिएट करा जाय फॉर एग्जांपल 2,4-D और नैप्थेलिन एसिटिक एसिड ओके द रोल ऑफ इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स से कोची की रोल ऑफ इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव जस्टिफाई द स्टेट तो इथिलीन और एब्सिसिक एसिड से कोची कि दिजन जगर किछि पॉजिटिव इफेक्ट्स भी अछि किछि नेगेटिव इफेक्ट्स भी अछि ओके दिजन जगर किछि बेनिफिट्स भी अछि और किछि साइड इफेक्ट्स बा डिसएडवांटेजेस भी अछि से बेसिकली एडा ही कहबा को चाहूची कि इथिलीन और एब्सिसिक एसिड आर नेसेसरी एविल्स ओके पॉजिटिव किछि इफेक्ट्स भी अछि जोटा भलो बा डिजायरेबल किछि अनडिजायरेबल इफेक्ट्स तो कोन कोन पॉजिटिव और कोन नेगेटिव अछि लेवटी पेज ऐड करी लिखि तो स्टार्ट करबा
इथिलीन रो पॉजिटिव इफेक्ट्स ओके पॉजिटिव इफेक्ट्स कौन प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ओके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ प्रमोट करियो प्रमोट्स पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कौन इथिलीन रो फर्स्ट होची प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ओके प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ आल्सो प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस ओके एपिकल डोमिनेंस को भी प्रमोट करछि एटा भी गोटे पॉजिटिव इफेक्ट ब्रेक्स हाँ सीड और बड डरमेंसी ओके सीड और बड डरमेंसी को ब्रेक करियर हेल्प करछि काहेकि ना इथिलीन रो एक्सपोजर जतो हबो बा इथिलीन स्प्रे करले हमरो जो पीनट रो सीड्स अछनी सेमानकर जर्मिनेशन हबो और पोटैटो ट्यूबर्स मानकर भी स्प्राउटिंग हबो ओके तो इथिलीन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ प्रमोट करछि एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करछि एज वेल एज सीड और बड डरमेंसी को भी ब्रेक करछि ता सहित इथिलीन promotes fruit ripening ओके इथिलीन फ्रूट को राइपनिंग करेबारे भी हेल्प करछि आउ रूट इनिशिएशन ओके सीडलिंग्स बा सैपलिंग्स रे रूट रो प्रोडक्शन बा रूट रो इनिशिएशन करबा पई भी हेल्प करछि फाइन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ प्रमोट करछि एपिकल डोमिनेंस प्रमोट करछि सीड और बड डोर्मेंसी को ब्रेक करछि फ्रूट राइपनिंग और रूट इनिशिएशन प्रमोट करछि एबे नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कोन इथिलीन अछि इट इनहिबिट्स longitudinal growth okay longitudinal growth को inhibit करूची enhances senescence induce करूची plant parts को बूढ़ा करूची it enhances senescence in leaves flowers fruits okay leaves flowers और fruits ର senescence induce करूची prolongs dormancy of lateral bud okay lateral bud मनंकर dormancy को lateral bud मनंकर dormancy को prolong करूची okay नेक्स्ट आमे जिबा पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एब्सिसिक एसिड इट हेल्प्स इन क्लोजर ऑफ स्टोमाटा ओके एब्सिसिक एसिड कोन करछि जतेबेले स्ट्रेसफुल कंडीशंस अछि सेतेबेले एब्सिसिक एसिड पड़ी तो हम जानछे एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन करा छै तो एब्सिसिक एसिड देखा इट क्लियरली लिखा छै इट स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा एंड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट क्लोजर ऑफ स्टोमाटा करले कोन हो क्लोजर ऑफ स्टोमाटा करले ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करला decreased transpiration so decreased loss of water okay एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा रो क्लोजर रिड्यूस करबो तो ट्रांसपिरेशन और लॉस ऑफ वाटर डिक्रीज करबो बिकॉज़ ऑलरेडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में अछि तो वाटर लॉस हमें अफोर्ड करि परिबा ना नाउ इंड्यूसेस रूट इनिशिएशन ओके इंड्यूस कौन करे रूट इनिशिएशन इंड्यूस करे एंड फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स ओके फ्लावरिंग भी इंड्यूस कराए किछि प्लांट्स जेमिति कि पाइनएप्पल रे एटी देखो क्लियरली लिखा है it देखो clear लिखा है ethylene is used to initiate flowering and synchronizing fruit set in pineapples it also induces flowering in mango very important point देखो ethylene रो किछ फंक्शन अछि आ गोटे फंक्शन भी ethylene रो एटा अछि कि से कुकुम्बर रो yield को इंक्रीज कराए by promoting female flowers more female flowers promote करे ethylene plus ये initiate करे flowering और fruit set को भी synchronize करे pineapples रे plus flowering induce करे mango plant रे okay also abscisic acid ର ଆଉ ଗୋଟେ benefit ଅଛି it promotes seed dormancy it promotes seed and bud dormancy okay it helps plant thrive in cold and stressful conditions okay cold और stressful conditions से plant ର thriving को से promote करे negative effects of abscisic acid जब देखिबा again promote senescence okay senescence cause कराए obviously death कराए plant parts मानकर रिटार्ड्स कैम्बियल एक्टिविटी ओके जो कैम्बियम रो एक्टिविटी सेटा को रिटार्ड करा दिए माने प्लांट ग्रोथ को से इनहिबिट कराए बा रिटार्ड कराए इनहिबिट्स फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स रो
फंक्शंस को इनहिबिट कराए और इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट हवा को दिए बुझा पड़ला। तो एथरो मु जाना पड़ला कि इथिलीन और एब्सिसिक एसिड बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रोल प्ले कराते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एक्सपेरिमेंटेशन व्हाई डू यू थिंक इट इज डिफिकल्ट टू असाइन एनी इफेक्ट सीन टू एनी सिंगल हार्मोन। ठीक अछि कि एक्सपेरिमेंटेशन करला बेले हमु बहुत सारा हार्मोन सारा इफेक्ट देखिया को मिले। तो एमिति काहे कि हुआ जाए कि इट इज डिफिकल्ट टू असाइन एनी इफेक्ट सीन टू एनी सिंगल हार्मोन। जो जो इफेक्ट्स हमु देखा जाए से इफेक्ट गुडी को कोनोसी गोटे सिंगल हार्मोन द्वारा ही इंड्यूस होची प्लांट रे, एटा कहबाटा काहे कि भूल हबो। बिकॉज़ किछि किछि कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट्स भी थाए। मन रखो जो भी हमरो हार्मोन प्लांट हार्मोन्स माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट शो करंती। इफेक्ट्स बा जहाँ भी हमारा हार्मोन्स मानकर एक्शन जो इफेक्ट देखा जाए, मोस्ट ऑफ द इफेक्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। ओके, इधर सेला सिनर्जिस्टिक हे पारे, अदरवाइज सेला एंटागोनिस्टिक हे पारे। को भी गोटे इफेक्ट गोटे सिंगल हार्मोन को हमें असाइन करि परिबा नाही। एटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो। एक्सपेरिमेंटेशन करला बेले बहुत सारा इफेक्ट देखा जाए बहुत सारा हार्मोन्स माने, बट जो इफेक्ट गुडी को थाए सेटा को गोटे सिंगल हार्मोन को हमें असाइन करि परिबा नाही। Most of the effects are coordinated effects of multiple hormones. Either सेटा complementary बा antagonistic हे पारे, otherwise सेटा individualistic बा synergistic coordinated effects हे पारे। Okay, तो देखते हैं हमें। तो प्लांट हार्मोन्स ऑफन वर्क इन कॉम्बिनेशन। मुझे बोला प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं ସେମାନେ ऑफन इन कॉम्बिनेशन वर्क करती, केबे भी एकुटिया काम करती। So some plant hormones have antagonistic effects while others have synergistic or augmentative effects. Antagonistic effect जेमिति कि एब्सिसिक एसिड रो मोस्ट ऑफ द इफेक्ट्स थाए सेटा जिबरलिक एसिड रो एंटागोनिस्टिक थाए। और किछि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट थाए जेमिति कि कैलस रो ग्रोथ को प्रमोट करिया पे ऑक्सीजन सहित साइटोकाइनिन देले प्रॉपर ग्रोथ हे परिबा, हम प्रॉपर्ली डिफरेंशिएटेड कैलस हम देखि परिबा। ओके, सो it is almost impossible to pinpoint any single hormone for a particular effect in a single plant part. Okay, वो गोटे पर्टिकुलर हार्मोन को गोटे पर्टिकुलर इफेक्ट अलॉट करना इम्पॉसिबल, बिकॉज़ जहाँ भी सब इफेक्ट्स देखा जाए समान कॉम्बिनेशंस ऑफ इफेक्ट्स थांती ऑफ डिफरेंट प्लांट। ओके, तो इटा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हमें को गोटे सिंगल हार्मोन को गोटे पर्टिकुलर इफेक्ट पई पिन पॉइंट करबा, एटा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं। प्लांट हार्मोन्स ब्रिंग आउट देयर इफेक्ट इन कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस एक्सटेंसिव फैक्टर्स। गोटे तो हमर हला कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स एक्ट करते, इधर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमको देखियो के, अदरवाइज एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखियो पड़े। आउ गोटे जिंस होची कि मोस्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन जो थांदी समानकर इफेक्ट ता इन कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स थाए। ओके, कोन पॉइंट अछि एटा मु लिखि दोछि, तापरे मु इरेज भी कर देबी। ओके, तो तमे नोट डाउन कर दो, तापरे इरेज करिकि मु सेम पॉइंट सेम जगह रे आउत नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करी। तो कोन पॉइंट अछि देखो, प्लांट हार्मोन्स ऑफन वर्क इन कॉम्बिनेशन। ओके, तो प्लांट हार्मोन्स माने कॉम्बिनेशन रे वर्क करंती, सेटा एदर सिनर्जिस्टिक हे पारे और एंटागोनिस्टिक है पारे। फाइन, सेकंड पॉइंट होची इट इज impossible to pinpoint a single hormone for any particular effect. Okay, गोटे particular effect में गोटे single hormone को pinpoint करिवाटा obviously impossible because plant hormones माने in combination with each other work करती। Moreover, आउ गोटे point एटा कि plant growth regulators effects, plant growth regulator माने हमर जो effect produce हुए सेटा are in coordination with, say effects गुडी को are in coordination with various extrinsic factors। मान रखो बहुत सारा extrinsic factors सहित कोऑर्डिनेट करिकि ये सब इफेक्ट्स प्रोड्यूस हुए। देखि एमिति भी पारे कि को गोटे हार्मोन रो एक्शन टा को गोटे पर्टिकुलर एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि कि एति टेंपरेचर एति एति टेंपरेचर रहबा दरकार कि एति एमिति रेनफॉल रहबा दरकार। जेमिति कि हमरा फ्लावरिंग। ओके, फ्लावरिंग के इंड्यूस करे, हमें ऑलरेडी एटा जानि छे फ्लावरिंग केमिति इंड्यूस हुए। तो हम फ्लावरिंग केमिति इंड्यूस है
हमें एटा देखे कि ऑक्सीजन भी फ्लावरिंग इंड्यूस कराए, राइट। इथिलीन भी फ्लावरिंग इंड्यूस कराए। ऑक्सीजन कोटे फ्लावरिंग इंड्यूस करूथला, ऑक्सीजन को ऑब्वियसली फ्लावरिंग इंडक्शन पे हमें यूज करा चाहिए बोली पढ़िछे। इथिलीन भी फ्लावरिंग इंड्यूस कराए हमें देखले पाइनएप्पल मैंगो सब रे। ता सहित फोटो पीरियडिज्म भी फ्लावरिंग इंड्यूस कराए। तो एमिति नहीं कि खाली हमें सिंपली ऑक्सीजन बा इथिलीन प्रोवाइड करते को गोटे प्लांट को तो से फ्लावरिंग इंड्यूस हो जिवो। ता सहित हमको प्रॉपर फोटो पीरियड भी देबाक पड़िबो। जदि से लॉन्ग डे प्लांट तो ताको मोर देन क्रिटिकल पीरियड लाइट एक्सपोजर देबाक पड़िबो। जदि से शॉर्ट डे प्लांट तो ताको लेस देन द क्रिटिकल फोटो पीरियड लाइट एक्सपोजर देबाक पड़िबो। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट एक्सपोजर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ डार्क पीरियड न मिलिले फ्लावरिंग इंड्यूस हे परिबानी, बिकॉज़ हाइपोथेटिकली लीव्स रो फ्लोरिजेन सेते बेले प्रोड्यूस हो जेते बेले ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फोटो पीरियड को एक्सपोजर है। तो ऑब्वियसली एही पॉइंट टा वेरी इंपोर्टेंट कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर माना जो इफेक्ट है सेटा इन कोऑर्डिनेशन विथ वेरियस एक्सट्रिंसिक फैक्टर थाए, जेमति कि केते फोटो पीरियड बा केते टेंपरेचर रोजी। वर्नलाइजेशन आ गोटे पॉइंट होचे हमर वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन भी हमको फ्लावरिंग इंड्यूस करार हेल्प करे। वर्नलाइजेशन विषय अबे हमें बहुत डिटेल रे पढ़ी ने को गोटे क्वेश्चन पक्का वर्नलाइजेशन विषय आसबो सेते बेले वर्नलाइजेशन कोन हमें रिवाइज करबा। तो वर्नलाइजेशन भी एठी हमर टेंपरेचर हुए कि फ्लावरिंग टा इधर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेंपरेचर। तो एठी हमको क्लियरली देखा जाउची कि इफेक्ट्स गुडी को गोटे सिंगल हार्मोन जोगु नै, मल्टीपल हार्मोन्स रो कॉम्बिनेशन अलोंग विथ एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऊपर भी डिपेंड करे। वर्नलाइजेशन कोन, वर्नलाइजेशन होची एमितियार भी प्लांट्स अछन जोथिरे फ्लावरिंग टा इधर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंड करे कि केते समय पई एक्सपोजर टू लो टेंपरेचर से प्लांट्स मानकर होची। ओके, प्लांट्स माने केते अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन लो टेंपरेचर को एक्सपोज होचंदी से ऊपर भी फ्लावरिंग हमर डिपेंड करे। फाइन, since it is difficult to assign any single effect to any particular hormone. Next question jiba, what is the mechanism underlying the phenomenon by which terminal or apical bud what is the mechanism underlying the phenomenon by which terminal or apical bud suppresses the growth of lateral blood? Name some measures to overcome this phenomenon. So the basically it again हमरो question आछे about apical dominance. Okay, सिखौछि कि एमितिया कोन mechanism अछि, what is the mechanism underlying the phenomenon, कौन से mechanism टा जोटा terminal बा apical bud जो द्वारा terminal बा apical bud lateral bud मानकर growth को suppress करछि आ only apical dominance देखा गुडे। तो phenomenon रो ना कोन, phenomenon रो ना होछि apical dominance। से पचारछि what is the mechanism underlying this phenomenon, apical dominance काहे की होय केमिति होय सेटा से पचारछि आ कोन कोन हमें मेजर नै परिबा टू ओवरकम apical dominance। फाइन, पेज ऐड करी लिखवा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एपिकल डोमिनेंस विषय रे पचारछि से हम रखो ए फेनोमेनन को कहा जाए, दिस फेनोमेनन इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। ओके, दिस फेनोमेनन इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस by which growing apical bud suppresses the growth of lateral buds। okay, एपिकल डोमिनेंस कहा जाए ए फेनोमेनन टा को, ए फेनोमेनन द्वारा जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड थाए से लैटरल बर्ड मानकर ग्रोथ टा को सप्रेस कर दिए। और रीजन कोन, रीजन होची हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन शूट एपेक्स। ओके, शूट एपेक्स रा हम जानचे हमर जो रूट और शूट टिप अछि से टिप रे हमर ऑक्सीजन सिंथेसिस हुए, तापरे से ऑक्सीजन टा सेठू माइग्रेट करके निजर साइट ऑफ एक्शन को, साइट ऑफ एक्शन कोन, साइट ऑफ एक्शन होची लिटिल बिलो द शूट एपेक्स। ओके, एकदम जो टिप रे हमर सिंथेसिस हुए ते टिप रु लिटिल बिलो आसी कि जोटा एक्चुअली मेरिस्टम टा प्रेजेंट है, बिकॉज़ तुम जे जानथिबो एटा जति हमर प्लांट रो टिप तो एठी हमर एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। ओके, एग्जैक्ट टिप रे हमर प्रेजेंट न थाए मेरिस्टम। टिप जो एटा जति हमर टिप ऑफ द शूट, एटा जति हमर शूट रो टिप तो शूट एपिकल मेरिस्टम जो थाए सेटा टिके बिलो प्रेजेंट थाए। तो एई टिप होची हमर साइट ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस। ओके, टिप होची हमर साइट ऑफ सिंथेसिस। ओके, साइट ऑफ सिंथेसिस होची हमर टिप और एपिकल मेरिस्टम होची हमर साइट ऑफ ऑक्सीजन रो एक्शन। फाइन, टिप रे हमर ऑक्सीजन सिंथेसाइज होची, तापर एठो एठी माइग्रेट करूची, माइग्रेट करके एठी आसी कि तारा एक्शन प्रोड्यूस हो।
तो जेहेतु हमर शूट एपिकल जेहेतु हमर शूट एपेक्स बा शूट रो टिप रे ऑक्सीजन रो सिंथेसिस हुए तो ऑब्वियसली सबुठु अधिका ऑक्सीजन रो एक्शन कोड देखियो जेहेतु शूट रो टिप रे हमर ऑक्सीजन रो सिंथेसिस हुए तो ऑब्वियसली सबुठु अधिका ऑक्सीजन रो एक्शन हमको शूट एपिकल मेरिस्टम रे देखियो मिलिबो बा एपिकल बट रे देखियो मिलिबो तो ऑब्वियसली लैटरल बट को कंपैरिजन रे ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशन मोर रहिबो इन एपिकल बट्स राइट तो ସେଥିପାଇଁ ଆମର एपिकल डोमिनेंस देखिବାକୁ पड़े ओके फाइन बुझा पड़ला एपिकल डोमिनेंस रो रीजन कोन जेहेतु शूट रो टिप रे ऑक्सीजन रो सिंथेसिस होची तो हाई कंसंट्रेशन ऑब्वियसली एपिकल बट रे रहबो एज कंपेयर टू लैटरल बट ସେଥିପାଇଁ एपिकल बट रो ग्रोथ अधिका होची और लैटरल ग्रोथ बट रो ग्रोथ सप्रेस हो जाउची एपे हम ओवरकम केमिति करिवा व्हाट आर द मेजर्स वी कैन टेक टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करिया पे हमें शूट एपेक्स को ट्रिम कर दे परिबा शूट एपेक्स कैन बी ट्रिम्ड फॉर एग्जांपल हमें ऑलरेडी काली गोटे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर रे सॉल्व करथिले कि जो जनरली हमर बोटानिकल गार्डन्स बा टी गार्डन्स थाए से किछि डेकोरेशन पई प्लांट्स थांती जो माने बहुत बुशी थांती ओके और जो गार्डनर में थांती एवरी डे रेगुलरली ट्रिमिंग करथांती से प्लांट मानकर एपिकल बर्ड्स को ओके प्लांट मानकर जो ग्रोथ है ना से प्लांट गोडी को रेगुलरली गार्डनर्स माने ट्रिमिंग करथि और ट्रिमिंग करबा जो से मानकर बुशी ग्रोथ अधिक हो बुशी ग्रोथ रिफर्स टू मोर लैटरल ग्रोथ ओके जत्ते अधिक लैटरल ग्रोथ हो सेते अधिक ब्रांचेस प्रोड्यूस हो राइट एपिकल डोमिनेंस नो हमर एक्सिस अलोंग रे ग्रोथ होची बट बुशी ग्रोथ केते बडे हो जत्ते बडे मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस प्रोड्यूस हो ब्रांचेस कोठो आसंदी ब्रांचेस ऑब्वियसली लैटरल बर्ड्स आसंदी तो जत्ते अधिक लैटरल बर्ड रो ग्रोथ हो सेते अधिक ब्रांचेस प्रोड्यूस हो सेते अधिक बुशी अपीयरेंस हो तो बुशी अपीयरेंस में रेगुलरली ट्रिमिंग करंदी गार्डनर्स में ट्रिमिंग करले कोन होय ट्रिमिंग करले हमर जो शूट एपिकल मेरिस्टम थाए सेटा रिमूव हो जाए शूट एपिकल मेरिस्टम जब रिमूव हो गला और जो शूट हमर जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड रो टिप थाए सेटा भी रिमूव हो जाए ट्रिमिंग करले सेटा को डीकैपिटेशन भी कहा जाए जोटा हमर ऑक्सीजन रो बायो एस्टर रे भी हमको देखला को मिलथिला तो जो हमर चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ऑक्सीजन रो डिस्कवरी करथिले राइट सेटा डिस्कवरी करथिले से माने ओट सीडलिंग रे सेटा से माने कोन केमे देखिथिले डीकैपिटेशन करिथिले कि नै जते बेले से माने एटा ऑब्जर्व करथे कि जते बेले से सीडलिंग टिप टा को से माने डीकैपिटेट करे देथिले बाय ट्रिमिंग करे देथिले सेते बेले ग्रोथ रिड्यूस हो जाउतला ओके लाइट रो डायरेक्शन रे बेंड होतला ओके लाइट रो डायरेक्शन रे बेंड होतला ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन राइट ऑक्सीजन आसी कि अगेंस्ट द लाइट जो पोर्शन टा लाइट रो एवे थाए सेही पोर्शन रा ऑक्सीजन डायरेक्शन रोतला जो जो टिप टा लाइट रो डायरेक्शन रे बेंड होतला बट जे रिपीटेड करे दोतले से सीडलिंग बॉडी को ओट सीडलिंग बॉडी को तते बेले सेटा ओट सीडलिंग थिला बा आउ पटे किछि गोटे थिला कैनरी किछि गोटे थिला राइट इनसेट रे देछि बायो एसे पार्ट रे इनिशियल पार्ट रे देखो जुरो कैनरी ग्रास सॉरी ओट सीडलिंग नहीं कैनरी ग्रास ओके तो चार्ल्स डार्विन कर पुओ होची हमर फ्रांसिस डार्विन ओके से माने ऑब्जर्व करथिले कि कोलियोप्टाइल्स ऑफ द कैनरी ग्रास ओके कैनरी ग्रास रो जो कोलियोप्टाइल छने से माने यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन को रेस्पोंड करछने बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स ओके जो डायरेक्शन रे लाइट सोर्स ग्रो कर जो डायरेक्शन रे लाइट रो सोर्स अछि बा लाइट से माने को प्रोवाइड कराउछि से माने सेही पर्टिकुलर डायरेक्शन रे ग्रो करछने माने से माने यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन এই ফেনোমেননটাକୁ এই মেথডটাକୁ यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन କୁହା ଯାଏ ଓକେ ଗୋଟେ पर्टिकुलर डायरेक्शन ରୁ इल्यूमिनेट କରାଉଛି ବା ଲାଇଟ ର ସୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଉଛି ସେମାନେ टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट सोर्स ग्रो करछन्ती कोलियोप्टाइल्स ऑफ द कैनरी ग्रास ओके এই पर्टिकुलर डायरेक्शन रे ସେମାନେ ग्रो करछन्ती it was concluded that the tip of the coleoptile was site of transmittable influence that caused the bending of the entire column. जो tip of the coleoptile थिला से tip of the coleoptile रे किछि त एमिति गोटे प्रोडक्शन होतला ऑब्वियसली सेटा पर जाना पड़ला कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन होतला और ऑक्सीजन ही से बेंडिंग टा को इंड्यूस करतला टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट ओके तो ऑक्सीजन फर्स्ट रे कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स रो एफडब्ल्यू बेंड सॉरी मुटे कंफ्यूज हो जाती ओट सीडलिंग टा को डार्विन रे कहि दिथि डार्विन और चार्ल्स डार्विन फ्रांसिस डार्विन कैनरी ग्रास ऊपर देखते कि ସେମାନେ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बेंड करछन्ती और एफडब्ल्यू बेंड ओट सीडलिंग रो कोलियोप्टाइल रो ऑक्सीजन को आइसोलेट करि
बट एटा भी देखाइथिला कि जेतेबेले डीकैपिटेशन हो जाए सेतेबेले पेंडिंग टा बंद हो जाए माने ऑब्वियसली ऑक्सीजन रो प्रोडक्शन न था ऑक्सीजन एब्सेंस रे पेंडिंग होय तो सिमिलर जिंस एठे भी हमर करा जाए एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करबा पे एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करबा पे डीकैपिटेशन करा दिया जाए जो द्वारा ऑक्सीजन सिंथेसिस बंद हो वाला हमें शूट टिप टाउ काटि दिले तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होला नहीं तो ऑब्वियसली एपिकल डोमिनेंस हबनी तो मोर पुशिंग ग्रोथ हो ओके शूट एपेक्स कैन बी ट्रिम्ड फाइन ए द्वारा हमारो लैटरल ब्रांचिंग प्रमोट हे पाइबो बिकॉज़ ऑब्वियसली लैटरल ब्रांच माने इजिली ग्रो करि परिबे सेकंड आउ गोटे वे जो द्वारा हम ओवरकम करि परिबा सेडा होछि यूजिंग साइटोकाइनेस साइटोकाइनेस रो फंक्शंस रो हम ऑलरेडी पढ़छे कि साइटोकाइनेस हेल्प्स इन ओवरकमिंग apical dominance. It clearly लिखा cytokinins help in overcoming apical dominance because it helps to produce new lateral shoot growth. Clearly it लिखा है also देखो it हम already red रे highlight कर सकते it helps to produce new lateral shoots which helps in overcoming apical dominance. तो यदि हम cytokinin apply करियो तो सही द्वारा भी apical dominance को overcome करि परिबा. Next question जिबा question number 9. आज क्वेश्चन नंबर 9 न करी कि अन्य गोटे क्वेश्चन करबा ओके क्वेश्चन नंबर 20 आज करबा fill in the blanks maximum growth is observed in which phase very simple maximum growth को phase रे देखा जिवो बेसिक एक्सपोनेंशियल फेज रे ओके लॉग फेज बा एक्सपोनेंशियल फेज ए क्वेश्चन टा भी ऑलरेडी हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रे करि सरचे ज्योमेट्रिक ग्रोथ रे तीनटा फेज थाए लैग फेज लॉग फेज बा एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज तो मैक्सिमम ग्रोथ और मैक्सिमम सेल डिवीजन कोड देखा जाए एक्सपोनेंशियल फेज रे बा लॉग फेज एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू एपिकल डोमिनेंस का जो है ऑब्वियसली आंसर इज ऑक्सीजन वेरी सिंपल राइट एपिकल डोमिनेंस काहे की हुए एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीजन जो हुई तो हुए ना ऑक्सीजन द प्रोडक्शन ही एपिकल डोमिनेंस कॉज करा है राइट डैश हार्मोन इनिशिएट्स रूटिंग वेरी सिंपल रूटिंग के इनिशिएट करे वो हार्मोन रूटिंग इनिशिएट करा है देखो it clearly लिखा है they help to initiate rooting in the stem cuttings an application which is widely used for plant propagation auxin okay तो clearly हमारा एठे आंसर हमको एनसीईआरटी रे मिली clearly it लिखा है auxin helps in rooting initiating rooting in stem cutting तो आंसर हो हमरा dash hormone initiates rooting clearly एनसीईआरटी रे लिखा है auxins help to initiate rooting in the stem cuttings an application which is widely used for plant propagation okay प्लांट प्रोपागेशन पे हमारा जो स्टॉक हाउस कायन तबे जानछो कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस यूज हुए तो जो कट्टा है छे स्टेम कोटे स्टेम को काटी सेटा को जो करा हमें कट स्टेम ओके गोटे स्टेम को हमें मझिरो कट कर देले सेटा को आनी कि हमें सॉइल रे पोती देले सेई जो स्टेम अछि सेई स्टेम रो रूट केमते जनरेट हो रूट तो सीड रो आसे रेडिकल रो बट गोटे स्टेम रो रूट केमते इनिशिएट हो सेटा थाय फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन ओके जदि ऑक्सीजन प्रोवाइड करागला तो इजीली हमरो इनिशिएट हे परिबो रूटिंग ओके ऑक्सीजन हमरो इनिशिएट करिवारे रूटिंग इनिशिएट करिवारे हेल्प करंती इन स्टेम कटिंग्स आ ए द्वारा प्लांट प्रोपागेशन इजीली हे पाए तो आंसर इज ऑक्सीजन पिगमेंट इन्वॉल्वड इन फोटो परसेप्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज को पिगमेंट ता फोटो परसेप्शन रे इन्वॉल्व होय फोटो परसेप्शन रे को पिगमेंट इन्वॉल्व होय प्लांट रो आंसर होची हमरो फाइटोक्रोम मन रखो आंसर कोन फाइटोक्रोम ओके फाइटोक्रोम होची हमरो पिगमेंट जोटा फोटो परसेप्शन रे इन्वॉल्व होय ओके phytochrome is the pigment which is involved in photo perception okay इटा हमरा एनसीईआरटी रे देई नहीं तो इटा गोटे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो एटा एनसीईआरटी रे देई नहीं एटा आउट ऑफ एनसीईआरटी अछि बट स्टिल एटा नीट रे आसी पारे बिकॉज़ एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इंपोर्टेंट ओके तो किछि किछि पॉइंट्स थे जोटा आउट ऑफ एनसीईआरटी थाए एनसीईआरटी एग्जाम करे सेटा हमहु सेपरेटली मन रखियो पड़िबो तो क्लियरली देखो क्वेश्चन रे अछि पिको पिगमेंट हमरो फोटो परसेप्शन रे इन्वॉल्व है ओके व्हिच पिगमेंट इज इन्वॉल्वड इन फोटो परसेप्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आंसर होची हमरो फाइटोक्रोम मन रहला फाइटोक्रोम तबे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करबा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रो थर्ड नंबर टा करियो आज टिके इजी क्वेश्चन करबा काली बाकी इजी क्वेश्चन रखो ऑलरेडी तुम मैंने बोर्ड है 90 क्वेश्चन देखी तो
बिट आंसर वाला क्वेश्चंस देखिबा नेम ए हार्मोन व्हिच इज गैसियस इन नेचर एटा मु तुम ऑलरेडी गैसियस हार्मोन रो कथा आसिला माने देयर इज ओनली वन हार्मोन व्हिच इज गैसियस इन नेचर एंड दैट इज इथिलीन ऑक्सिन साइटोकाइनिन जिबरलिन एब्सिसिक एसिड और इथिलीन ए पांचटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रो ओनली गोटे ही हमर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अछि जोटा गैसियस इन नेचर और दैट इज इथिलीन ओके मन रहला नेम ए हार्मोन से पचाछि पांचटा रे हम गोटे हार्मोन रो नेम देबा तो नेम ए हार्मोन व्हिच इज गैसियस इन नेचर वो हार्मोन टा हमर गैसियस इन नेचर था इथिलीन ओके फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन होछि नेम ए हार्मोन व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म तो एठे आ गोटे मु एठे पॉइंट हाइलाइट करियो चाहिबे जोटा जनरली कंफ्यूजन क्रिएट करे गोटे होछि हमर फोटो पीरियडिज्म आ गोटे होछि फोटोट्रॉपिज्म कंफ्यूज हेपार नहीं बारंबार कहछि कंफ्यूज हेपार एठे जस्ट हमें देखिथिले फोटो परसेप्शन बा फोटो पीरियडिज्म रो अदर टर्म बा सिनोनिम हमें फोटो परसेप्शन कहि परिबा सेथिरे जो पिगमेंट इन्वॉल्व हुए फाइटोक्रोम और को पिगमेंट इन्वॉल्व हुए माने हार्मोन इन्वॉल्व हुए जल्दी पचारला ऑल्दो हाइपोथेटिकल बट आंसर हवा हमर फ्लोरिजन बुझा पड़ला फोटो परसेप्शन बा फोटो पीरियडिज्म रे को हार्मोन इन्वॉल्व हुए आंसर फ्लोरिजन को पिगमेंट इन्वॉल्व हुए आंसर फाइटोक्रोम बट एटी से फोटो परसेप्शन बा फोटो पीरियडिज्म कोनी बेसिक बेसिक टर्म जोटा हम ऑलरेडी 10th क्लास रे 9th क्लास रे पढ़ी सारछे से हमको फोटोट्रॉपिज्म विषय रे पचारछि व्हाट इज ट्रॉपिज्म ट्रॉपिक ग्रोथ डायरेक्शनल ग्रोथ फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म मानो पका फोटोट्रॉपिज्म डायरेक्शनल ग्रोथ ओके ट्रॉपिक ग्रोथ बा डायरेक्शनल ग्रोथ कोन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म केतेबेले को आजिबो जेतेबेले टुवर्ड्स द लाइट हमर ग्रोथ हो growth in the direction of light towards light for negative phototropism or positive geotropism negative phototropism against the negative phototropism केतेबेले को आबो जेतेबेले हमरा against the direction of light growth against the direction of light हमर ग्रोथ हो सेतेबेले सेटा को हमर negative phototropism को आबो बा रूट जो शो करन ठीक है पड़ला रूट शो करन हमर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म रूट माने शो करंती नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म माने टुवर्ड्स अर्थ जियो मींस अर्थ टुवर्ड्स अर्थ बट टुवर्ड्स ग्रेविटी जदी ग्रो करछि सेटा होय हमरो रूट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होछि रूट से कहछि को हार्मोन हमरो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म किछि लेखा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म नेबो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म के शो करे शूट शो करे राइट हमारा जो टिप ऑफ द शूट था शूट एपेक्स था से शो करे पे जस्ट हमें डिस्कस करथिले कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन कौन ऑब्जर्व करथिले कि हमारा जो कैनरी ग्रास रो सीडलिंग गुडी अछि जो कैनरी ग्रास अछि से कैनरी ग्रास रो जो कोलियोप्टाइल था से कोलियोप्टाइल था टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट बेंड कर बा ग्रो कर कैनरी बेसिक अबे हमें जस्ट हमें 5 मिनट्स तक डिस्कस करथिले कि जो कोलियोप्टाइल था हमरो कैनरी ग्रास रो से इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बेंड करे बा सही डायरेक्शन में ग्रोथ करे एटा को ही फोटोट्रॉपिज्म कहा जाय और को हार्मोन रिस्पांसिबल थिला सिंपल ऑक्सिन बुझा पड़ला चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन कौन ऑब्जर्व करथिले कैनरी ग्रास रो जो कोलियोप्टाइल था से टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट तो यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन करा जाय सेटा को से रेस्पोंड करे बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स ओके और इट इंड्यूस कराए हमरा ऑक्सिन रहला डायरेक्शन ऑफ लाइट इटा इनसेट में दिया अछि बायो एसे वाला पार्ट ओके तो ऑक्सिन होछि हमरा रेस्पोंसिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म नेक्स्ट व्हिच इंड्यूसेस फीमेलनेस इन द फ्लावर्स ऑफ कुकुम्बर अगेन आंसर होछि हमरा इथिलीन वेरी सिंपल ऑलरेडी हमें देखि सकते कि इथिलीन कुकुम्बर यील्ड को केमिति इंक्रीज करा है बाय प्रमोटिंग फीमेल फ्लावर क्लियरली आंसर दिया अछि फीमेलनेस इन द फ्लावर्स ऑफ कुकुम्बर इथिलीन which is used for killing dicot weeds dicot weeds को मारिया पे के यूज हो देखो एट क्लियरली लिखा है ऑक्सिन्स आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स फॉर एग्जांपल गोटे सिंथेटिक ऑक्सिन अछि जोटा को 2,4-D को जाय which is widely used to kill dicotyledonous weeds देखो dicotyledonous weeds को किल करिया पे यूज करे and it does not affect mature monocot plants okay mature monocot plants मानको ऊपर किछि इफेक्ट पकाय नहीं
it only kills the dicot weeds. Clearly लिखा है dicot weeds को kill करिया ପାଇଁ को हार्मोन दरकार ऑक्सिन. Last question, it induces flowering in long day plants. Long day plants रे flowering induce करोच को हार्मोन एबे flowering induce करेबो. Flowering induce करिया ପାଇଁ को हार्मोन था को flowering induce के करा what a second मन का पेड़ा बड़े important point. Flowering induce by जिपरलिन ला it induces flowering. एटा भी हमारा NCERT रे बहुत clearly दिया है नी देखो जिपरलिन पार्ट रे इसे long day plant रे long day plants रे flowering induce कराइबो बोली बट एटा ही हमारा truth. Okay, एटा मो हॉट्स लिखि दोची high order thinking skills out of NCERT गुडी को. ओके, जिपरलिक एसिड ओके बा जिपरलिन मन रहिला ओ प्लांट ओ हार्मोन लॉन्ग डे प्लांट रे फ्लावरिंग इंड्यूस करे एटा एनसीईआरटी रे दे आउट ऑफ एनसीईआरटी अछि पर मन रखि दियो आंसर होची जिबरलिक एसिड. ओके क्लियर. अब केतरा क्वेश्चन रहला लॉन्ग क्वेश्चन डेटा बाकी रहला शॉर्ट क्वेश्चन हमर क्वेश्चन नंबर 9 to 19 बाकी रहला राइट. यस 9 to 19 में 11 टा शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 टा लॉन्ग क्वेश्चन. तो नेक्स्ट सेशन रे हम एटा कंप्लीट करेमा. ओके थैंक यू.